फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिच जूसून। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ बसल्टन सिटी में, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और पर्थ से काफ़ी नज़दीक है। और इस सिटी के बारे में क्या खास है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे कुछ लोग मिल गए जो स्कूबा डाइविंग जो डू स्कूबा डाइविंग and Busselton jetty. ओके बाय। Bye. Have fun. दोस्तों, बसल्टन जो सिटी है ये 1832 में बसल फैमिली जो थी उनके द्वारा फाउंड की गई थी और तभी से इसका नाम बसल्टन है। और ये पर्थ से 220 किलोमीटर है। और इसके बारे में मैं बताऊं, ये 1995, 1996 और 2005 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टॉप टूरिस्ट टाउन जो है इसका खिताब इसके पास है। तो इस सिटी में आना मेरे टूरिस्ट एक्टिविटी प्लानर में बिल्कुल भी नहीं था। मैं यहाँ पे स्काई डाइविंग की इंफॉर्मेशन लेते हुए गलती से पहुँचा, तो फिर मैंने जाना कि ये सिटी तो बहुत ही खूबसूरत है। इसको खूबसूरत बनाती है यहाँ की बीचेस, सिटी खुद, लोग, तो पॉपुलेशन 25,000 और ये जेटी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर मैं मिला एक सज्जन से, एक मित्र से, जो कि स्पेन से आए हैं और पूरे ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स को साइकिल पे घूमेंगे। Here's my friend. I found him. He's coming from Spain on this cycle. Yeah. On this cycle, right? How are you? Your name? Arturo. Arturo. My name is Sherry. Nice to meet you. And he came here from Spain in Yeah. the city, Melbourne. I started in Cairns, in Queensland. From where you started your journey on cycle in Australia? In Queensland. In Cairns. Queensland. He's coming from Queensland and will go anonymous places. Yeah. Yes. For 7 months. For 7 months. He work here, earn money and travel. Again. This is life. And Arthur, nice to meet you. Nice to meet you. ओ भाई साहब, ये जो हैं आर्थुरो, ये स्पेन से आए हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आके क्वींसलैंड से अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है इस साइकिल पे, और पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूमेंगे ये 7 मंथ्स। मैंने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो किया इससे पूछ के, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस पे गए हैं और उन्होंने अपने कैमरा से बहुत अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें। Hi man. I need one cafe latte. One latte. Yeah, to have here or take away? Here, dining. And I need a small one. Yeah, whereabouts are you sitting? Whereabouts are you sitting? Here, outside. Yeah, whereabouts so we can run it out. Outside here. One small latte. It's just $4.10. Thank you. Machine when it lights up. Latte and sugar. How many do you Thank need? Just one? Yeah, just 2. Alright. Thank you. No worries. लाटे जो हमारी आ चुकी है। Your name? My name is Sophie. Sophie. Okay, Sophie. I'm Sherry and I'm coming from India. Okay. So I came across, basically I was searching for a skydiving spot here. There is a airport nearby. Yeah. But I came across on Google this place, Busselton Jetty. But so do you have any information about this place? So just the jetty. Yeah. I think it's the longest jetty in the southern hemisphere. Okay. I think it's just over 2 kilometers long. Fine. And yeah, it's a major tourist destination. Tourist People destination. come from everywhere to see it.
Yeah. So ये है सोफ़ी, यहाँ पे एज ए वेट्रेस काम करती है और इन्होंने मुझे अपने यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया। जो जो पीछे एक सी में आप देख रहे हैं वो है जेटी, जिसके बारे में मैंने कहा था आपको बाद में बताऊँगा। जेटी वहाँ पे है और वहाँ पे ट्रेन जाती है जिसकी टिकट कुछ $4 to $5 है और वहाँ पे आप जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। और उसका मतलब ये है जेटी का कि इनटू द सी, समुंदर के अंदर एक वुडन और उसके ऊपर रेल ट्रैक बनाया गया है जहाँ पे लोग वहाँ अंदर तक जा सकते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर इनसाइड द सी है। I'm not too sure specifically, but heaps of wineries and like tree climbing places and yeah, heaps of places. Lots of caves as well. Yeah, especially in Margaret River and that. So, Margaret River. yeah, Fine, good. So how far is Margaret River from here? I'd say about 30 kilometres. So it takes about half an hour to an hour. Half an hour. Yeah, Good. by car. Okay, nice. Thank you, Sophie. That's okay. Hi to my viewers. Oh, it's a video. Hello. Hi. Hello everyone. This is Sophie and thank you, Sophie, again. That's alright. तो आप सब लोगों ने बीच वॉलीबॉल के बारे में सुना होगा। जब मैं आया तो यहाँ पे बीच पे नेट लगे हुए थे, तो वहाँ पे एक ये लड़का था, तो मैंने इससे पूछा बीच वॉलीबॉल खेलने के बारे में। My name is Sherry. The basic rule of this game is for 4 players play at single time and 2 players on each side. Yep, And each player have to pay $50 for one game. yep, for the whole season. And for one game you earn 200. Right? Yep, sure. Okay. अभी देखते हैं किस तरह से खेलते हैं ये गेम, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। So I'm on this. Yep. So what we can do, You go there because there is sun over at the back. You will cover better. Yeah. yep. So we can either have a hit, you and I together on both sides. We just get balls to each other. Yep. So we can start over here and just get the ball. So if you haven't played volleyball before, yeah. Alright. So we've got 2 movements really. So you've got the kick. So it's pretty much your hands together and you're kicking the ball to yourself. Here, Yep. On this part. not here. No. You've just got a little bit more control because that's a flat part of your So what if player try to hit from this? If often will just go out. disqualified? No, it's just the ball will often go out in a different direction. So better to hit from this area. yeah, just a little bit flat. Yep. So that way, because generally with a team of 4, you'll have one person here who's the setter, and you have 3 people over here. And running on. Yep. Yep. So just lock your hands a little bit together. Yep. Perfect. So that would be for those players over there, and their job is to get the ball, which is served, to me. So then I can put it out to either side for these people. I have to smash to Yeah. the opposite side Yeah. So if you were without to, touching the net. no, you can't touch the net. Otherwise, it's the other team's point. Yep. So I'm going to throw the ball to you, and you're going to try and get it back to me, and I'm going to put it up for you to hit over the net. Right. Yep. Or doing it, go on this side, just so we don't get into the ocean. Just come over here. Just so that when you hit it over, we don't get into it. Yep. So I'm going to throw the ball up to you. Yep. And you've got to run. Yeah. It's your turn or mine. I have to smash. Yeah. I'm done. You're done? And Cool. Connor. your sister. Yep. Yep. My younger sister. So you both are studying, still in school. Yep. 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 This is my School or last year. college? School. So I've School. still got one more year of school. I'm in year 12.
at Anika's in year 10. Okay, hope you do better in your future. Thanks so much. Best of Cheers. luck. तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इसी बीच के जो रेस्टोरेंट है जहाँ कॉफ़ी पी रहा था उसके बैक साइड एक फेस्टिवल था, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। तब के लिए बाय बाय, रीच यू सून।